watching NTV Houston. This is Madiha Masood. Stay-at-home orders around country are being lifted in some states और कहीं extended हैं. लेकिन situation 18th मई तक बिल्कुल normal होती नजर आ रही है. Worries for the economy, businesses reopening, and people's mental health are raising the questions. Lockdown end होने के बाद, how will things go back to normal, and what will that normal even look like? Today we have with us Danani Group founder and CEO Shaukat Danani with us. During our discussion, we will be talking about impact of coronavirus on big and small businesses reopening. Welcome, sir, to NTV Houston, and thank you for taking the time out of your busy schedule. हमें बताइएगा कि COVID-19 का इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पर, बिजनेसेस कैसे इफेक्टेड हुए, इधर फूड बिजनेसेस एंड रिटेल स्टोर्स, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ब्रिंग बैक बिजनेसेस? वेल, ये कोविड की वजह से सब बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं. Some more than others, like casual dining restaurant, they are hurt the most. Fast food restaurants obviously are hurt, but not as much. But other retail and manufacturing are hurt even a lot more. But obviously it's going to be a very, very long time before everything can get back to normal. I'm hearing it could be 12 to 18 months before things can see going back to normal. Okay. How did you tackle the economic crisis? Layoff की क्या situation रही during lockdown and economic crisis? Well, you know, हमारे जो mostly businesses हैं, I would say we kept like more than 95-96% of the employees on payroll as they were. We had very minor layoffs in the beginning. But then with the PPP money that has come, तो उसके बाद now everybody is back to work, almost 100%. Okay, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 ट्रिलियन की एड दी गई गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन बहुत से लोग जॉबलेस हुए, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हाईएस्ट रहा. जिनका लॉस हुआ, क्या वो पहले जैसी सिचुएशन में वापस आ सकते हैं? गवर्नमेंट की हेल्प क्या सफिशिएंट रही? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? Well, government की help थोड़ी बहुत है, but I would say it's not sufficient नहीं है. Obviously, it cannot be, and I don't think government can have enough money to make it back as sufficient. But just इतना है कि they are keeping us our head above the water, so we stay in business and we survive a few months. ओके, अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनका सारा फोकस अब जा रहा है बिजनेसेस रीओपनिंग पर. ऑन द अदर हैंड, कोरोना वायरस इज अनकंट्रोल्ड येट. व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? वेल, मेरा ये ख्याल है कि दे वांट टू ओपन बिजनेसेस. आई थिंक दे आर बहुत जल्दी कर रहे हैं खोलने का, एंड आई थिंक इट्स गोना बैकफायर वेयर as we start opening up, COVID cases इतनी तेजी से बढ़ते जाएंगे. So I don't think this is the right approach. Okay, according to the research, 7.5 million small businesses are on risk या permanently वो बंद हो जाएंगे. As you have a vast experience, what do you think? कितना मुश्किल होगा small businesses owners के लिए कि वो दोबारा से stable condition में आ सके? कोई आप उनको solution दे सकते हैं? Well, the solution to obviously everybody's position is different, the business is different, but the only thing I can say, and this applies to all the people in the business, small, big, preserve your cash, hang on to your cash, and don't spend any more money than you absolutely need to. Okay, इस सिचुएशन में जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक टाइम है? आप जो नए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दिस इज नॉट द टाइम. You need to wait at least minimum 6 to 8 months till the end of the year. कि देखें क्या होता है and how everything settles down, and maybe at that time, sometime next year, to analyze and to see if that would be the right time. But until the end of the year, I don't see it. इस क्राइसिस के टाइम में टेक्नोलॉजी को बड़ा टर्न मिला है. वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस,
और इसी तरह से जो है हमने देखा कि सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं टेक्नोलॉजी में। क्या लोग फ्यूचर में भी कॉशन रहेंगे लाइक इन पर्सन मीटिंग के लिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली विद कोविड की वजह से जो चेंजेस, काफी चेंजेस आई है हर एक की लाइफ में और बिजनेसेस में. बट सम ऑफ द चेंजेस जो आई है, लाइक for example, our office, our staff, everybody is working from home. That we have never done that before. We're doing all the conferences via Zoom and with using all those technology that I think we will continue to use in the future. And then ये भी है कि काफी लोग we will keep as working from home even after everything opens up. So yeah, there'll be a lot of changes that have come that will be adopted permanently. ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए, स्टॉक मार्केट डाउन हुई। आईएमएफ ये बता रहा है कि 1930s के बाद ये वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिली है। पहले क्राइसिस को देखते हुए कितना टाइम लग सकता है एक डेवलप कंट्री को वापस पहले जैसी सिचुएशन में आने के लिए? Well, see, देखें, this is the biggest unknown. The biggest unknown at this point के ये COVID, how long is it going to last? You see, अगर we knew for sure कि भाई 3 months or 6 months में we'll have a solution for it, then we can say, okay, after everything we have a solution, then maybe it'll take another 3-4 years to get back to normal. But yeah, at least it'll take at least 5 years to get back to normal where we were before, under any circumstances. ओके, आपके फूड चेन की अगर हम बात करें तो आपके फूड चेन का जो मॉडल है ये डाइन इन पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर लोग टेक अवे की भी ऑप्शंस पहले भी अवेल कर रहे थे और अब भी कर सकते हैं। बट आपका ओपिनियन क्या है कि वो रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ डिपेंड ही डाइन इन पर कर रहे थे उनका 60 से 70% लॉस हुआ इस पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से? कितना मुश्किल है उनके लिए इस तमाम सिचुएशन को कोप अप करना? और क्या आपसे किसी ने डिस्कस किया अपना ये प्रॉब्लम कि किस तरह से वो एक बड़ा डिजास्टर फेस कर रहे हैं? Well, जी बिल्कुल. Of course, our restaurants, हमारे majority of our restaurants are fast food, which है हमारे पास drive-thrus हैं. So we are running most of our business through drive-through and delivery and carry-outs. And we have a very small amount of restaurant जो casual dining है, and they have no drive-through. So there, our businesses are down like 65-70%. And then we are opening up our dining rooms as they are allowing us at 25% of the capacity. But of course, that helps a little bit. But to get back to normal where we used to be, I don't know if we ever will. Or even all these casual dining restaurants, I don't know if they will get back to what they used to be. अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और रिस्ट्रिक्शंस के साथ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं लाइक 25% ऑक्यूपेंसी के साथ। मुश्किल है ये ऑर्डर्स फॉलो करना या इज इट ओके? No, it's okay to follow the orders. It's not that hard. But again, like I said, to keep that social distancing, keeping 6 feet apart and all that, it's not that hard, but it doesn't generate enough volume to support all the expenses that we have to go through. आपको क्या लगता है कि अब ये तमाम एक्सपेंसेस को कोप अप करने के लिए जो जिस रेट पर पहले फूड मिल सकता था, क्या इससे रेट्स बढ़ जाएंगे? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर सेम रेट्स पर ही फूड अवेलेबल होगा? I think मेरा ये ख्याल है कि रेट्स बढ़ेंगे. As it is, there is I'm sure you know the supply interruption with beef and chicken and pork and all of that. So there is already supply interruptions, and because of that, beef prices have already gone up, and other products have already gone up, and there is a shortage of availability. So, of course, if हमारी cost बढ़ेगी, तो all the restaurant will pass it on. Okay. How can businesses deliver better outcomes in the time of crisis? Say that again, I'm sorry. मतलब इस क्राइसिस के टाइम में जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों की ईज के लिए? जैसे कि अभी आप खुद डिफाइन कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो प्राइस रेट है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर डेफिनेटली आप लोगों के कस्टमर्स भी कम होंगे, तो उस सिचुएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं लोगों के लिए?
well, the लोग यही कर सकते हैं कि we keep our costs down and operate as lean and mean as we can, so we can pass on the pricing to the customer and इतनी price न बढ़े कि where customers आना बंद कर दें. And ठीक है। that's what we are hoping for. सर आप क्या समझते हैं कि जब डेवलप जो कंट्रीज हैं वो इतना बड़ा ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी क्या सिचुएशन होगी और उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? जी, developing countries, especially like Pakistan hai, India hai, and Bangladesh, and all these countries, seems like अभी तक we're very fortunate कि भाई वहाँ पे COVID it hasn't hurt that much, and I think obviously जो day to day काम करके जो अपना घर चलाते हैं, they are in a big trouble. Obviously, everybody is trying to help, even government and private companies and individuals, but they're in a tough situation. But again, I think they're blessed in a sense that they don't have the COVID effect, which it could be worse. You know, just say for example, like Karachi mein, if you would have spread like New York, we have no facilities, and it would have been a disaster. So I'm hoping and praying that nothing like that happens in any of those countries where they don't have the facility to handle it. ओके सर, ये एक इसकी प्रॉब्लम कोविड-19 के प्रॉब्लम की वजह से स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो बिजनेस का भी एक सिस्टम है, तो ये किस हद तक इफेक्ट हुआ है? जैसे कि आपका भी एक स्कूल चेन है, ये किस हद तक इफेक्ट हुआ है और जैसे कि वो टोटली क्लोज है, कितना लॉस है ये स्टूडेंट्स के लिए भी और बिजनेस ओनर के लिए भी? See, this is a very tough situation. Just say whatever the colleges or universities or school are, what I say, for profit, you know, उनके लिए तो obviously ये काफी बड़ा नुकसान है. जैसे there are other institutions like I'm affiliated with Habib University in Karachi. You know, most of the 90% of the students are in scholarship. So उनके लिए a lot of the students that used to pay some of partial fees, अभी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है to pay. And then also the donors and supporters of the school are, you know, business people and all that. Now they are also in trouble. Their income is not that much, so they're not being able to donate that much. So it's going to be a very, very tough situation for either profit and or non-profit institutions. Okay, sir. Lastly, any message for the general public जो परेशान है economic crisis की वजह से? Well, like I said, सब परेशान हैं, कोई कम, कोई ज़्यादा, but I guess we हिम्मत रखें, hope and pray and do the best you can, and inshallah we will all come out of it safe and sound. Okay, thank you so much, Shaukat Danani, for your valuable advices and suggestions for small and big businesses owners and those who are listening to you. Thank you very much again. Okay, thank you. It was my pleasure. जैसा कि हम सब जानते हैं, स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कीपिंग इन देयर माइंड कि कस्टमर्स की सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टास्क भी है. दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ. फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.